हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है वहाँ पे जनरलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो अपना सॉल्व कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा है MS एक्सेल। ओके, इसके पहले भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी वीडियोस आप देख लीजिएगा ताकि पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। ओके, NICL का हमने एक पेपर पोस्ट किया है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पोस्ट किया है आज मॉर्निंग। ओके, वो भी आप देख लीजिए। अगर NICL का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसका भी प्रिपरेशन अपन स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, फर्स्ट मॉक पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2024 मार्च का, वो मैंने वहां पे अपलोड किया है। प्लस उसी के साथ इवनिंग में पॉसिबल हुआ तो मैं SBI क्लर्क का भी प्रीवियस ईयर का पेपर पोस्ट करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर टेक्स्ट स्ट्रिंग तो है तो उसके लिए है अपने पास लेंथ फंक्शन। ओके, second, in Excel, which function is used to calculate sum of range of cell that meet specific condition? The answer is sum if function. Okay. Next, third, which of the following keyboard shortcut is used to add a new worksheet in Excel? Answer is Shift plus F11. Okay. Next, fourth, what is the maximum number of row in worksheet in Excel 2016 and later version? The answer is 10,48,576. Next, fifth, which Excel feature is used to visually represent data through chart? The answer is insert chart. Okay. Next, six. Which of the following formula would you use to find average number in a range of B1 to B10? The answer is equal to average function. Okay. Next, seventh. What does the function VLOOKUP do in Excel? तो VLOOKUP vertical row select कर देते हो यहाँ पर, देखो, return the same value in the row from specified column. Okay. Next, eight. In Excel, what does dollar symbol in formula represent? So absolute reference. Okay. Next, ninth. Which of the following function is used to count number of cell in range that contain numbers? The answer is count function. Next, tenth. Which chart type is used in Excel to display the relationship between two variables? The answer is scatter plot. Okay. Next, 11th. In Excel, how can you freeze the top row so that it remain visible when you scroll down? तो देखिए, व्यू मेनू में जाके फ्रीज पेन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें फ्रीज टॉप रो को अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके टॉप रो क्या होगा, फ्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट, 12th. Which of the following is the correct syntax of if function in Excel? if function क्या होता है कि सबसे पहले इक्वल टू if, देन कंडीशन, देन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट, 13. व्हाट डज कॉन्केटेनेट फंक्शन डू इन एक्सेल? तो कॉन्केटेनेट मतलब कंबाइन करना। ओके, तो देखिए यहाँ पे combine two or more string into one. Next, 14. In Excel, what is the keyboard shortcut to open find dialog box? तो आंसर है Control plus F. Okay. Next, 15. Which of the following option allows you to sort data in Excel? आंसर है डेटा ऑप्शंस में sort का ऑप्शन आएगा, वहां पे अपन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, 16. Which function can be used in Excel to find largest number in set of values? Answer है max function. Next, 17. How do you change the column width in Excel? तो देखो, राइट क्लिक ऑफ कॉलम हेडर एंड कॉलम विड्थ को अपन चेंज कर सकते हैं, देन डबल क्लिक कॉलम हेडर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करने के बाद भी यूज होता है, देन ड्रैग द बाउंड्री ऑफ द कॉलम हेडर। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 18. In Excel, what is the shortcut key to apply currency format to a cell? तो आंसर है Control plus Shift plus dollar. Okay. Next, 19. What does the function countif do in Excel? Countif क्या करता है? Count the cell that meet a specific condition. Next, 20.
What is the shortcut to copy paste select cell in Excel? The answer is copy, control plus C. Next, 21. Which of the following function is used to find the current date in Excel? Answer is equal to today function. Next, 22. In Excel, what is pivot table used for? The answer is summarizing and analyzing large amount of data. Next, 23. Which of the following function allows you to return the value of cell located at intersection of specific row and column in Excel? Answer है index function. Okay. Next, 24. What is the purpose of sum product function in Excel? Answer is calculate the sum of product. Product मतलब multiplication of corresponding value in two or more range. Next, 25. What is the default file extension for Excel workbook? The answer is .xlsx. Okay. Next, 26. Which of the following feature is used to limit the data that can be entered in cell based on specific criteria? Answer is data validation. Next, 27. In Excel, how can you add a comment to a cell? तो देखो, राइट क्लिक करके सेल पे इंसर्ट कमेंट का भी ऑप्शन आता है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पे भी कमेंट सेक्शन आता है, या प्रेस शिफ्ट प्लस F2 से भी आता है। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 28. Which function in Excel return the number of character in text string? आंसर इज लेंथ फंक्शन। ये पहला भी क्वेश्चन देखा था अपन ने। Next, 29. In Excel, which option is used to merge multiple cell into one? Answer है merge and center. Next, 30. Which function can be used in Excel to find the smallest number in range of value? Answer है mean function. Next, 31. Which of the following is a valid range reference in Excel? तो देखिए A1 से लेके A10, तो यहाँ पे A:10, यहाँ पे A1 2 3, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो A कोलन कोई भी रेंज अगर सिलेक्ट करना है एक्सेल में तो बीच में क्या आता है, कोलन सिंबल का यूज होता है। नेक्स्ट, 32. What does the function text do in Excel? Answer is convert number to text in a specified format. Next, 33. Which of the following chart type is used to show proportion in Excel? Answer is pie chart. Next, 34. What is the function of control plus arrow key in Excel? Answer is move the last filled cell in the current row or column. Next, 35. What is the use of conditional formatting feature in Excel? तो देखिए, change font color based on condition, change the cell color based on condition, and highlight the cell based on criteria. Answer is all of them. Okay. Next, 36. Which function is used to calculate the compound interest in Excel? Answer is FV function. Okay. Next, 37. What does free span feature do in Excel? Answer is free span rows or column while scrolling. Next, 38. Which of the following option is used to remove duplicate in Excel? तो डेटा ऑप्शंस में जाके remove duplicate ऑप्शन आएगा वो। Okay. Next, 39. Which Excel function will you use to round the number of specified number of decimal places? Answer है round function. Next, 40. In Excel, which of the following is the correct way to use a cell reference in formula? तो देखो, इक्वल टू A प्लस B1 होता है, इक्वल टू सम ये भी होता है, और इक्वल टू ये भी। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अब। नेक्स्ट, 41. Which of the following is used to import external data into Excel? तो एक्सटर्नल डेटा अगर इंपोर्ट करना है तो डेटा में से फ्रॉम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डेटा ऑप्शंस में से फ्रॉम वेब भी कर सकते हैं, एंड फ्रॉम वेब अदर सोर्स भी कर सकते हैं। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। Next, 42. What is the primary purpose of pivot chart in Excel? Answer is summarize and visualize data from pivot table. Next, 43. What type of reference is used when copying a formula to another cell
without changing the reference in the formula. तो आंसर है एब्सोल्यूट रेफरेंस. ओके. नेक्स्ट 44. Which of the following chart type is used to show trend over time? The answer is line chart. Next 45. Which of the following function return value based on result of a condition in Excel? The answer is if function. Next 46. Which Excel features allows you to combine multiple column of data into one? तो देखिए concat फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट जॉइन फंक्शंस भी होता है और concat भी होता है. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Next 47. Which of the following is the best way to protect a worksheet from unauthorized editing? Answer is lock cell and protect the worksheet. Next 48. How do you hide a column in Excel? तो देखिए राइट क्लिक कॉलम हेडर देन हाइड का ऑप्शन आएगा, प्रेस कंट्रोल प्लस एस से भी होता है, देन क्लिक होम टैब देन फॉर्मेट देन हाइड एंड अनहाइड. आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव. Next 49. What is the purpose of data validation feature in Excel? So data validation काम क्या करता है? To restrict the type of data that can be entered into a cell. Next 50. In Excel, which function will you use to find the median value of a range? तो आंसर है median function. Okay. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.